you look at the P&L. P&L will help you to find out how is the performance of the company. How is the performance of the company in that year? P&L से मालूम पड़ेगा. And then what you do? Then you look at the balance sheet. Balance sheet will give you the financial position of the company. Balance sheet will give you financial position of the company कि assets क्या हैं और liabilities क्या हैं. So एक company है जो profit and loss उसका देखा आपने. And from P&L you are able to see, yes, this company is making profit, this company is making good EBITDA, good EBT, good EAT. So it will give you one idea, yes, the company's operations are good. Then you look at the balance sheet, and from the balance sheet it can happen, and please pay attention, from the balance sheet it can happen that you would see that company is having a very high level of inventory, very high level of receivables, and that is a bad sign. That is a bad sign. Why it is a bad sign? Please pay attention, because company profit तो बना रही है, company is earning profit for sure, but what is happening? The profit is not going into the bank account of the company. The profit is going and sitting in the inventory of the company, sitting in the receivables of the company. तो that is a bad sign. क्योंकि अगर मैंने माल तो बहुत बेचा है और माल बेच के मैंने सेल्स तो मेरी बहुत बढ़ा ली है और प्रॉफिट भी मेरा अच्छा हो गया, लेकिन अगर मेरा पैसा कस्टमर के पास में अटका पड़ा है तो ऐसी सेल्स का मुझे क्या फायदा? So that is how you will look at the balance sheet, and balance sheet will give further strengthen your understanding about the performance of the company. And then you look at the cash flow statement. और कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको मालूम पड़ेगा कि भाई ये कंपनी कितना कैश जनरेट कर रही है, कितना कैश जनरेट कर रही है, कैश कहां से आ रहा है, कैश कहां पे जा रहा है, ये उससे. अब देखो और ध्यान से सुनो, अब जस्ट पे अटेंशन. P&L को देखा, एवरीथिंग इज गुड इन दी P&L. बैलेंस शीट को देखा, एवरीथिंग गुड इन दी बैलेंस शीट ऑल्सो. इन्वेंट्री भी कम है, रिसीवेबल्स भी कम है, तो वो सब अच्छा है. लेकिन और जब आपने कैश फ्लो को देखा तो आपको मालूम पड़ा कि कंपनी का जो कैश है वो एक ऐसी कंपनी को फंड करने के लिए हो रहा है जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप P&L अच्छा कर रहे हो, बैलेंस शीट भी आपकी बढ़िया है, लेकिन आपका जो कैश का यूटिलाइजेशन है वो अच्छे इन्वेस्टमेंट में होने के बजाय ऐसी कंपनी को फंड करने में जा रहा है जो कि डाउन अंडर होने वाली है बहुत जल्दी. सो दिस इज हाउ यू वुड लुक एट all the three statements, and that is the reason we are discussing all the three statements. So we discussed P&L, now we will discuss balance sheet, and then tomorrow we will discuss the cash flow statement also. Hope that answers your query.